ये अलाउ नहीं कर, बिल्कुल भी ये अलाउ नहीं करेगा कि आप ये कहो कि आई एम एन एक्सपर्ट इन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, नाउ आई कैन अप्लाई दिस। ठीक है, दिस सेशन इज ओनली टू इन्फॉर्म यू दैट कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। After that, these 39 people will be ready to get के what they are learning. ठीक है, let's move forward and start our session and have a introduction of this one. Introduction, introduction से start करते हैं हम। लास्ट में ना सबसे पहली चीज जो आपने स्टार्ट की थी, एनीवन आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कि जब आपने न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन या जो भी फील्ड से, जिस भी फील्ड से आप हैं, आपने जब अपनी वो फील्ड स्टार्ट की थी, तो क्या उन्होंने आपको पहले ही दिन आपको डिग्री दे दी थी? क्या उन्होंने पहले ही दिन आपको क्या दिया था, बेटा यू आर गोइंग टू बी सिट इन योर फाइनल एग्जाम्स? क्या उन्होंने पहले दिन आपको प्रोजेक्ट्स देना स्टार्ट कर दिए थे? ऑब्वियसली नो, because everything start from zero। ABC आपने पढ़नी स्टार्ट करनी है पहले। So let's have an introduction of this। The introduction of professional skepticism is very crucial for, especially for nutritionists and dietitians, क्योंकि इनका रोल प्रैक्टिकल लाइफ में है। The role of nutritionist and dietitian is very important in the life of a normal person। हम इसे इतनी नहीं देते टेंशन, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आई हैव टू एडमिट ईच एंड एवरी। ठीक है, देयर विल, यू विल बी एबल टू लर्न कि आपकी क्वेश्चन अजम्पशन क्वेश्चनिंग कैसे होनी चाहिए, अजम्पशंस कैसे लेनी है, अजम्पशंस चैलेंजेस क्या होंगे, आपको अपनी एविडेंस कैसे प्रूव करना है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग is alternative explanation। Alternative explanation is just like कि आपने किसी से क्वेश्चन पूछा है, so you have the answer in your mind as well। अगर आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा है और आपके दिमाग में उसका आंसर नहीं है, so do you think that you will be able to prove that answer? आप सामने वाले के आंसर से सेटिस्फाई हो जाएंगे? आपके दिमाग में उसका आंसर नहीं है, you don't know the answer of that question and you are putting the question to someone else, so that will not let you do that। So in this presentation you will be able to learn questioning, assumptions, challenges, evidence and alternative explanations। So without further ado, let's sit on the white, let's fly। This is a time where I have to inform all of you that what is professional skepticism। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है, कि अगर आपके क्लाइंट ने आपको कोई एविडेंस दिया है, अगर आपके क्लाइंट ने कोई आपको इंफॉर्मेशन दी है, सो व्हाट डू यू थिंक कि आप उस इंफॉर्मेशन को आंखें बंद करके यकीन कर लोगे? रेज योर हैंड इफ यू थिंक दैट यू विल एक्सेप्ट द दैट इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक जैसे आपके क्लाइंट ने आपको दिया, आप उस चीज को हक और सच मान लोगे? रेज योर हैंड इफ यू थिंक दैट। Yes, not a single person raised them। The thing is कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब है नेवर एवर एक्सेप्ट द थिंग जैसे वो आपको भेजी गई है। आपने हमेशा ये नहीं कहना ओके सो दिस इज द थिंग, ये मुझे मिली है, दिस इज द राइट, नेवर। और ना ही ये कहना कि इसमें कोई गलती है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मींस पॉजिटिव माइंडसेट रखते हुए आपने इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करना है, इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करना है, और उसमें ये देखना है कि देयर कैन बी अ चांस ऑफ मिस्टेक, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ मिस्टेक। समटाइम्स जब आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यार which university is offering the MS for nutritionists and dietitians, and someone says the University of Faisalabad is offering that, do you think that
एंड दैट पर्सन से यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से अच्छी कोई यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती, विल यू एक्सेप्ट? फौरन मान जाएंगे आप फौरन उसकी बात को मान लेंगे और आप सारी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में जो जो आपसे मिलेगा आप उसे कहेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से अच्छा एमएस कोई नहीं करवाता, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से एमएस अच्छा कोई नहीं करवाता? नो, you have to search yourself, you have to do the analysis, you have to ask him question, why he is saying this. Biasness ना आए, there can be a biasness कि उसे दूसरी यूनिवर्सिटीज के लोग ना अच्छे लगते हो, he has a friend in another university और उस यूनिवर्सिटी में जो उसका दोस्त है उससे दोस्त ना अच्छा लगता हो, so there can be a biasness in that one as well. So professional skepticism is that you have to start questions, आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें, with that you will be able to boost your communication skills as well. अगर मैं ग्रुप में पूछता हूं कि how many of you will be able, how many of you think that I am a confident speaker, many of you will say that I am a confident speaker, I am a confident speaker, I am a confident speaker. Why is no? I am asking all of you that anyone would like to come on this podium, anyone would like to open the mic and read this slide, any one of you, anyone dare to open their mic and read this slide? Not a single person. Not a single person came on the stage and decided to read this slide. So this is what will be boosting by this professional skepticism. Your communication skills will be boosted. Why do you think that when I was first on the stage, I was speaking like this? No. Always remember the phrase. अभी आपके पास कोई डायरी है, कोई रजिस्टर है, कोई पेज है, कोई मोबाइल है, कोई नोटपैड है, just note down the thing that we learn by doing. We never learn by reading, we never learn by listening, we never learn by looking at things. We learn by doing. This is the reason that our learning based 10% learning based on the reading, 10% on the listening, 80% हमारी जो लर्निंग बेस कार्य होती है वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बेस कार्य होती है, 80% हमारी लर्निंग जो बेस कार्य होती है वो हमारी राइटिंग स्किल्स पे बेस कार्य होती है, 18% जो हमारी लर्निंग होती है वो हमारी खुद पे बेस करती है कि हाउ वी आर टैकलिंग दैट सिचुएशन, हाउ वी आर टैकलिंग दैट नॉलेज. So this is the professional skepticism that never ever accept the information. Doesn't matter वो आपके सीनियर से इंफॉर्मेशन आ रही है, doesn't matter कि आपका जूनियर इंफॉर्मेशन दे रहा है, that information is not a hadith. You have to think that there can be a mistake, but in a positive side, not in a negative side. So this is the definition of professional skepticism, and I tried to explain it in a very well manner and in an explained way. I hope that you all know that what is professional skepticism right now. Now let's move to the next and the most important thing as well. That what are the benefits of professional skepticism? Being a Pakistani, अगर हमें कोई चीज ऑफर होती है तो हमारा सबसे पहला आंसर, सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है, मैं कर तो लूं, मुझे क्या फायदा होगा. दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ पाकिस्तानीज, दैट पाकिस्तानियों का सबसे पहला क्वेश्चन ही ये होता है कि ओके आई एम रेडी, लेकिन मुझे फायदा क्या होगा. नाउ दिस इज अ स्लाइड in front of all of you and I would like to say all of you to read this slide ताकि जब मैं इस चीज को अपने एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप लोगों को पता हो कि सामने क्या लिखा है, और someone of you will not try to read that कि जो बोला जा रहा है वही लिखा हुआ है. So all of you have 30 seconds and read this slide.
Okay, so let's move and the benefits of professional skepticism. What are the benefits of professional skepticism? Just take an example that you are a dietitian or nutritionist having your own clinic. A company approached you, a company ने आपको approach किया and they asked you that, ma'am, sir, kindly market our products. Our products consist of these ingredients. Our products are the world's best number one. So what will you say that? Okay, आप अपने क्लाइंट्स को ये कहना स्टार्ट कर देंगे, दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोडक्ट, दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ब्रांड, this is the world's best product. If you will start this, so sorry to say that you are not a professional. That why? क्योंकि आप एक दूसरे की बात पे चल रहे हैं, दूसरे ने जो कहा आपने वैसे मान लिया, आपने उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं देखे. You have not asked him to give the proper procedure of that product. You didn't ask him कि मुझे पूरा प्रोसीजर बताया जाए how you are making these supplements, and you didn't ask him that if my client has a diabetes, if my client has a problem of any problem of blood pressure, then is it suitable for him? And what will you make exemption? Okay, if he said that this supplement is for everyone, this supplement is for everyone. If he said this, that means this is for everyone. A person with the problem of diabetes, a person with a problem of blood pressure. Will you make this assumption as well? And if you are creating this assumption, so again, sorry, you are not a professional. You are creating your own assumptions. You didn't ask the person who is giving you the information. A client came to you and he said, ma'am, I have diabetes, so kindly create a diet plan, make a diet plan for me. And you just said, okay, sir, this is your fee and you have to take the supplements. Did you ask him the diabetes issue? Did you ask him the reports of his diabetes? Did you ask him कि diabetes उसकी कब से है? Did you ask him कि उसे डायबिटीज का इश्यू कब से है, ज्यादा है, कम है? If you didn't ask, so sorry to say you are not a professional. Benefits of professional skepticism is conflict of interest. Conflict of interest नहीं है. Biasness, as I already informed, कि आपका पास कोई क्लाइंट आता है, आपके पास कोई कंपनी अप्रोच करती है आपको, एंड दे सेड काइंडली मार्केट आवर सप्लीमेंट्स, और एक डाइटिशियन आपको, सीनियर डाइटिशियन आपको आगे कहता है, मौजम यू हैव टू डू दिस, बहुत अच्छी कंपनी है, यू हैव टू डू दिस, एंड इफ यू आर फॉलोइंग हिम and you started marketing that, so what is the professional skepticism? Where is the professional skepticism? There can be a biasness. हो सकता है वही सप्लीमेंट जो हो वो उस आपके सीनियर की फूफो के बेटे ने बनाया हो, उस सीनियर की फियांसे ने बनाया हो, उस सीनियर की फियांसे ने अपना नई वर्किंग स्टार्ट किया हो कि यार घर में बैठी बैठी मैं हाउसवाइफ हूँ, घर में बैठी बैठी मैं थक जाती हूँ, लेट्स स्टार्ट अ सप्लीमेंट्स. So there can be a biasness. You have to ask the question. Question पूछो उससे तो why he is saying that, what are the ingredients, and why you should market that thing, and how that will be beneficial for your clients. And I hope that the benefits of professional skepticism are explained very well. So, challenges to professional skepticism. Challenges क्या है? As many of you are students, आप लोगों को projects मिलते हैं. Sorry. You always get projects from your universities.
and you get deadlines. आपको deadlines मिलती है, ठीक है? You have to follow those deadlines, and you have to complete your project in that time. And while creating a professional skepticism, इसमें आपको टाइम लग सकता है. The most important factor is time factor. Sorry, the most important factor is the time factor, जो आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, हर जगह पे टाइम फैक्टर इज वेरी क्रूशियल. सो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, दैट इज अ टाइम प्रेशर एंड कंपीटिंग प्रायोरिटीज. आपको आपके पास 3 क्लाइंट्स आते हैं एंड दे आस्क यू दैट प्लान एंड दे आस्क यू थिंग्स दैट they ask you the most important things. One of you is facing a very serious condition, but you know that he is from a middle class family and he will ask you the discount and he will not pay you that amount. And one is from very well family, very well background, and you know that he only wants to lose his weight. And if you are prioritize that person who just want to lose that his weight, अगर आप उसे prioritize कर रहे हैं, तो that is not a professional skepticism. सबसे सेकंड नंबर पे जो आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में चैलेंज आता है, दैट इज योर प्रायोरिटीज. कि आपने प्रायोरिटीज कैसे सेट करनी है, बिकॉज प्रायोरिटीज सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रायोरिटीज भी सेट करना एक लाइफ में ना इंपॉर्टेंस आ जाती है. थर्ड थिंग, assumptions, जो मैंने आपको पहले भी बात बताई है. दैट assumptions, the person came to you and he said this is the world's best supplement, and you accepted that, you agreed with that, and you gave that, you think that this is the best product for diabetes person as well. आपको उस डायबिटीज का पर्सन आया, आपने उसे वो सप्लीमेंट दे दिया. नेक्स्ट डे वो आके कहा, मैम आई लॉस्ट माय वेट, लेकिन एक चीज कम हुई है, दूसरी बढ़ गई है. एक बीमारी खत्म हुई है, दूसरी बढ़ गई है, and that is just because of your supplement. So what will you do that? वहां पर आप क्या करेंगे? इतना तो मुझे पता है, बीइंग अ पाकिस्तानी हम वो गलती उसी पे डाल देंगे कि नो सर यू डिडंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो की होंगी, हम कर लेंगे. But when it comes to ourselves, we will not be able to accept that कि हमने क्या नाम है गलती की थी. We made an assumption कि this supplement is for everyone. We made an assumption that everyone can use this supplement. So this is the crucial, that while creating an assumption, you have to mention that, you have to keep in mind that this should be the beneficial for persons, not for the your your suppliers. Yes. So these are the challenges of professional skepticism. Now, developing professional skepticism, आप develop कैसे कर सकते हैं professional skepticism? How you can develop the professional skepticism? The same thing. Ask the questions. If your senior is giving their thing, अगर आपके senior ने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया है, अगर आपके सीनियर ने आपको कोई डाइट प्लान दिया है, that you have to work on this, और या उसने दिया है कि this is the diet plan I just created. Just like take an example that in our field there is an exemption. There is an exemption that a company can use 2 frameworks. एक कंपनी 2 फ्रेमवर्क यूज कर सकती है, और एक कंपनी ने एक फ्रेमवर्क यूज किया हुआ, दूसरी ने दूसरा फ्रेमवर्क यूज किया हुआ है. नया इंटर्नी आया, नए इंटर्नी ने वो देखा, नए इंटर्नी का सर दैट कंपनी इज फॉलोइंग द अदर फ्रेमवर्क, वो तो कोई और फ्रेमवर्क देख रही है और हम कोई और फ्रेमवर्क. व्हाई दिस इज, सो दिस शुड बी योर एज वेल, दैट आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए. इफ यू थिंक दैट इन दिस डाइट प्लान, इस डाइट प्लान में ये चीज इतनी होनी चाहिए थी, दिस विटामिन शुड बी इन दिस वैल्यू, कि इस विटामिन की इतनी वैल्यू होनी चाहिए थी, बट व्हेन इट कम्स टू योर डाइट प्लान, आपके सीनियर ने आपको कोई डाइट प्लान, आपके सीनियर ने आपको कोई ये रिपोर्ट दी है, एंड यू कैन सी दैट द विटामिन इज हायर देन द एक्सपेक्टेड, और आप उससे पूछते हैं सर व्हाई डिड नॉट यू सर्कल दिस थिंग,
ये तो हायर है. This is the professional skepticism. But words कि वो आपको देता है, आप आगे पहुंचा देती हैं, और जब उसमें गलती निकाली जाती है, do you think that your senior will accept that? Your senior will say, मैंने आपको दिया था, आप देख नहीं सकते थे. We learn by doing, and we learn by getting feedback as well. If you deal with a client, अगर आपने किसी client के साथ deal किया है, do share that case with your friends as well. अपने किसी dietitian friend के साथ share करें that this is the case, ये सारा सिनेरियो था, and I gave this cure, मैंने ये इसका solution निकाला है, what do you think about that? I'm damn sure you will learn something new. वो आपको एक नई चीज बताएगा, वो आपको इसका नया solution बताएगा, वो कहेगा yeah you did a great job, but I think अगर ऐसा करते तो ज़्यादा फायदा हो जाता. He will say that, I'm damn sure, you know. So you learn something new by questioning, by getting feedback, by giving feedback. That. So when it comes to our field, तो हमारे पास एक चेकलिस्ट होती है. We always auditors have a checklist that we have to follow that checklist. We have to follow that framework. Just like अगर किसी ने अपने statements को FBI को भेजना है and they are using the framework of international accounting standards, तो हम उससे पूछते हैं that FBI will not accept this. So by questions पूछिए. Never ever accept the thing that is presenting to you. Counter question करना सीखें, but in limits में रहते हुए काउंटर क्वेश्चन करना सीखें. आपको कभी भी कोई नहीं कहेगा, कोई सीनियर नहीं कहेगा if he is mature, if she is mature, if she is professional, he is professional, they will not say कि how dare you to ask a question from me. They will never say. So this is the developing a professional skepticism. Now professional skepticism in practice, कि आप इसे प्रैक्टिस में कैसे ऐड कर सकते हैं. रिसर्च स्टडीज, reliability of nutrition information sources, identify potential. अब मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है, सब लोगों से, that any one of you जो अपने क्लाइंट्स को 100% एश्योरेंस देता हो, 100% एश्योरेंस देने के बाद ये कहता हो सर आई एम डैम श्योर कि आपका वेट कम होगा ही होगा, आई एम डैम श्योर कि आप कामयाब हो ही जाएंगे. आप लोगों में से कौन कौन अपने क्लाइंट्स को 100% एश्योरेंस देता है? I would like to say, I want to see your hand. Raise your hands if you give this. Raise your hand अगर आप अपने क्लाइंट्स को 100% एश्योरेंस देते हैं. See, raise your hand if अगर आप अपने क्लाइंट्स को 100% एश्योरेंस देने के बाद कहते हैं सर अगर आपने ये वाली इंस्ट्रक्शंस फॉलो की हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप कामयाब होंगे. A single hand raised by anyone. One hand raised. Okay. There, who did this? Let me see. Who raised his hand? Muhammad Shahib Anwar. Shahib bhai, would you please open your mic? Mr. Shahib, would you please open your mic? Or you can use the chat box as well. That कि आप अपने client को 100% assurance कैसे देते हैं? How can you give that assurance? Kindly give me the answer of this one. And open his mic, but किसी और ने कर लिया. Okay, let's move. First of all, let me clear that you can't give the 100% assurance. Check. You must be confident in your program and process. Okay.
You must be confident in your program and okay. And no, sir, we can't give. We just motivate and help us in the journey. Okay. So, Shweba, first of all, I would like to tell you that the confidence and progress is not the each and everything. Okay? There are inherent limitations in your field. आपकी जो फील्ड है ना न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन इसमें इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं जो कि लिमिटेशंस बहुत अच्छे से चलती आ रही है ठीक है सो विद दैट यू कांट गिव द absolute insurance you can't give the 100% assurance because once I asked the question that last गवर्नमेंट बजट में न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन की रिसर्च के लिए कितना बजट था आई आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू I asked this question from all of you, and believe me, not a single person was able to answer that. उसे आप लोगों को उन्हें पता ही नहीं था कि हमारी फील्ड के लिए गवर्नमेंट ने कितना बजट मुख्तिस किया है they don't know. And the thing is, इस रिसर्च के लिए गवर्नमेंट का बजट बहुत ही मिनिमल होता है और जो प्राइवेट सेक्टर्स जो फंडिंग कर रहे हैं देयर आर मैनी प्राइवेट सेक्टर्स जो न्यूट्रिशनिस्ट की रिसर्च में प्राइवेट फंडिंग कर रहे हैं व्हाट दे आर डूइंग उनकी मोस्टली फंडिंग जो हो रही है उनके सप्लीमेंट्स को मार्केट करने के लिए हो रही है सो these आर द लिमिटेशंस कि आप कभी भी अपने क्लाइंट को एब्सोल्यूट इंश्योरेंस नहीं दे सकते these आर द लिमिटेशन कि आप उसे कह नहीं सकते यार the absolute insurance is not possible in the life. This is the universal rule. सिर्फ इसी फील्ड की नहीं किसी भी फील्ड में एब्सोल्यूट इंश्योरेंस नहीं मिल सकती डॉक्टर निकल के उस ऑपरेशन थिएटर से ये नहीं कहता कि आपका बच्चा कंफर्म बच जाएगा डॉक्टर भी निकल के यही कहता है कि वी ट्राइड आवर बेस्ट एग्जाम सेंटर से निकल के आप भी यही कहते हैं कि आई डिड माई बेस्ट बाकी अल्लाह जाने और किस्मत भी है so absolute insurance is not possible bro then the most important thing that when you are asking your client is sir what you eat in the last week और वो आपको वो 40 टाइप के फूड्स गिनवा दे तो how will you give an analysis आप कैसे एनालिसिस करेंगे और कैसे उसे रिएक्शन देंगे बेस्ड ऑन द थिंग जो उसने मोस्टली यूज की हो उसी पे करेंगे ना these guys are too shy they are not text they are not reading चैट बॉक्स में तो नहीं लिख सकते यार आप क्या करना है इतना शाय हो क्या क्या बनेगा इससे वहां ओके लेट्स नॉट फॉरगेट कि आप उसे उसका एनालिसिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि उसने ज्यादा कौन सा यूज किया बेस्ड ऑन 24 रिकॉल ओके सो this is my question from Miss Khadija Irfan that based on 24 recall I think इसका मतलब आपका यही है कि based on कि last 24 hours में उसने क्या फूड यूज किया है और क्या चीजें यूज की हैं am I right यही मतलब है ना इसका based on yes okay so the question is कि उसकी जो health effect हुई है that is affected by the food he took 2 days ago या you can say that कि जो उसने 2 दिन पहले या 3 दिन पहले चीज ली थी उसकी वजह से उसकी बॉडी इफेक्ट ज्यादा हुई है so how you can that is it possible or not कि a person उसकी इसने जो 2 दिन पहले खाना खाया था उसकी वजह से उसकी हेल्थ इफेक्ट हो is it possible or not everyone is it possible or not is it possible or not yes it is possible
It is possible. It's not possible. Okay. So how, why is it? Okay, it's possible. Yes, it is possible. So the thing is कि आपने assumption ले ली that कि उसने last 24 hours में जो खाया है उसकी वजह से उसकी health effect हो गई है, and you gave him a suggestion that said this is the reason why your health is affected, but the reason is something else. So how can you say that? मैं उसे absolute insurance दे दूंगा. How can you say that? These are the assumptions. आपने कैसे assumption ले ली कि उसने जो लास्ट 24 घंटे में खाया है उसी की वजह से उसकी हेल्थ इफेक्ट हुई है. हाउ कैन यू से दैट? So assumptions are very dangerous. These are very dangerous, especially for a person जिसकी practical life में काम है. It is in every field. So प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अप्लाई करना है तो आप लोगों को अच्छी तरह से आ ही गया होगा आई थिंक, एंड यू विल बी एबल टू नो द इम्पोर्टेंस. नाउ एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मैंने ऑलरेडी बता दी है. इवन यू कैन रीड दिस स्लाइड एज वेल कि इसमें हो जाता है वैलिडिटी ऑफ न्यूट्रिशन क्लेम्स मेड बाय फूड कंपनीज. जस्ट लाइक अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि कंपनी ने आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट अपने सप्लीमेंट्स दिए हैं एंड दे सेड दे क्लेम, उन्होंने क्लेम किया क्लेम किया कि उनके सप्लीमेंट से अच्छा सप्लीमेंट दुनिया में कोई है ही नहीं. सो आप उसके प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बाय प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आप उसकी वैलिडिटी देख सकते हैं, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स दे सकते हैं ऑफ इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट बाय न्यूट्रिशनिस्ट. एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हुई है. लिमिटेशंस, देयर आर ऑलवेज लिमिटेशन ऑफ एवरीथिंग. डजंट मैटर कि उसकी हर चीज का प्लस और नेगेटिव साइड है. हर चीज की प्लस और नेगेटिव पॉइंट होते हैं. तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की लिमिटेशंस क्या हैं? समटाइम्स होता है ना हम इमोशंस में आ जाते हैं. लाइक जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आप पेपर में बैठे हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आपको एक टॉपिक बहुत अच्छा आता है और उस टॉपिक से 17 नंबर का क्वेश्चन आ गया. अब आपने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, आपको मजा आना स्टार्ट हो गया. अब आपको मजा आ रहा है, लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, एंड व्हेन यू जब आपने उस क्वेश्चन को पूरा किया, आपको पूरा टॉपिक आता था, आपने पूरा टॉपिक छाप दिया, 17 नंबर का क्वेश्चन आपको पूरा हो गया एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट 17 नंबर तो कहीं गए नहीं. आपने नजर उठाई है 1.5 घंटा, 1.5 घंटा आपने एक ही टॉपिक में लगा दिया है. सो इज इट गुड और नॉट? भाई एक टॉपिक था, आपको अच्छा सा आता था, आपने उस पर बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया. सो द सेम थिंग इज दैट कि आप इमोशंस में आके ज्यादा स्केप्टिकल हो जाते हैं. आप इमोशंस में आके ज्यादा क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं. जस्ट आपके पास एक रिपोर्ट आई है, आप क्लाइंट से पूछ रहे हैं आपका नाम एहसन क्यों है? एहसन आपका नाम रखा किसने था? किसी कंपनी ने आपको सप्लीमेंट दे दिया और आप कंपनी से पूछ रहे हैं कि आपने इसका ये नाम क्यों रखा है इस सप्लीमेंट का? आपने इसका नाम ये क्यों नहीं रखा? आप मेरे पास ही क्यों आए हैं? These are not the questions that you should ask. But some people got emotions. इतने इमोशनल पीपल, और ये मोस्टली इंट्रोवर्ट होते हैं. Everyone used to say that I am introvert, I am introvert. So I am saying that mostly mistakes are done by introvert people. ठीक है? और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि आप एक मिसिंग इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्शन जोड़ें अवेलेबल इंफॉर्मेशन का. आपके पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है आप उसमें से एक मिसिंग इंफॉर्मेशन निकालें जो कि एक चीज जो कि निकल सकती है. सो न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस अपने क्लाइंट्स को एक बहुत ही अकॉर्डिंग टू मी हाई क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बट इन लिमिट्स. The next slide is conclusion. Conclusion is simple कि आपको professional that you should prefer to use professional skepticism in your life. Either you are a student, start asking questions from your teachers.
Ask questions from your seniors. Ask questions from your colleagues and get feedback from them. If you get a project, आपके टीचर ने आपको out of 30 you got 30 out of 30. Still you have to ask a question. Yes, sir, what is the best quality in my project that you gave me the all 100% marks? Still you have to ask the question. Start asking questions. Start getting feedback. Try to get the evidence of each and everything. These are the three factors that I think that you all should keep in mind. The three factors of today's session. Start questioning, get feedback, and the third one is evidence. So this is all from my side. My email is mentioned, contact number is mentioned. You can share your name with me so I can add you in contacts. You can add me on LinkedIn. LinkedIn is a professional platform where you can learn something new and where you meet with people of your field. Instagram is also mentioned, and now questions are appreciable. How completely you know about profession? Do you offer any course any other platform? First of all, let me tell you कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में कोई कोर्सेज वगैरह अकॉर्डिंग टू मी के कोई कोर्सेज नहीं मिल सकता. अकॉर्डिंग टू मी कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में आपको बताएगा. जस्ट अ मिनट. There is no platform जो आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में बताएगा because this is a practical life. You have to learn it from your professional life. आप इसे खुद सीखेंगे. We learn by doing. This is what I said. We learn by doing. So professional skepticism के बारे में आप खुद सीखें. You have to learn about it yourself. Search about it. ACCA, CA, ICA में इनके YouTube चैनल्स में बहुत सी ऐसी वीडियोस पड़ी है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, why professional skepticism is important, how you can encourage professional skepticism. So these are the things. And the questions are appreciable. As I said, start asking questions. The questions are appreciable. I'm done. I'm just waiting for your question, and if there will be no question, we'll be compiling our session here. Anyone of you have any question or any suggestion? What if your questions are not appreciated? What if your questions are not appreciated? आज ही मैंने ग्रुप में एक भेजी थी कि get out from the phrase लोग क्या कहेंगे. This phrase shatters a lot of the dreams every day. Never ever think that you are asking a bad question. Why? आपके ज़हन में क्वेश्चन है, ask the question. And if someone is not appreciating that question, इसमें उसका flow है. This is a drawback of his, not yours. You have to keep asking your questions. So if your question is not appreciated, you should not be worried, because you should be happy that I learned something new. This is the answer of your question. (9:46) and we'll be compiling the session on 9:50. If anyone have the question, then kindly share in the chat box so you can open your mic. Also, you can approach me via WhatsApp, Instagram, or LinkedIn. I will be available there. What happens if you get wrong advice and wrong appreciation from your colleagues and seniors? Because mostly professional people hearts are need clearing that someone crossed them in the field.
The thing is, as I already said, that getting feedback low. In the whole section, एक दफा भी मैंने कहा हो कि जो आपको फीडबैक मिले उस पे आपने इम्प्लीमेंट करना है, उसे आपने उसे इम्प्लीमेंट करना है। इन होल सेशन कहीं भी मैंने कहा हो कि आपने सामने वाले की बात जो आप सामने वाले ने आपको क्या आपने उसे एक्सेप्ट करना है, आपने उस पर बस शुरू हो जाना है कि हाँ दिस इज द वर्ल्ड ऑफ लाइफ। वी हैव टू टेक दैट एडवाइस, we have to think on that advice, that once that person is giving their suggestion, and believe me, there is not a very wrong advice. How can he imagine a person जिसने 4 साल की डिग्री कर ली है, that person is giving the wrong advice? No, that person जो advice आपको दे रहा है वो किसी और basis पे दे रहा है, he is right on his side. So there is not a wrong advice. There is always an advice with another logic. Get feedback and analysis. उसका analysis करें. Simple. I hope that you got the answer. Okay, and now I think that we are not having any question. And I thought to do this an activity, but right now when I key, that will lose my confidence. But let's do it. The thing is, did you really like the session? Thumbs up and give the reaction. There is an option of giving reaction on Zoom. You can thumbs up. मुझे लग रहा था कि इस एक्टिविटी से मेरा कॉन्फिडेंस लूज होगा। लेट्स सी। Oh, I can see many thumbs up. I learned a lot of information from you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. Really appreciate it, and I would appreciate all of you कि अगर आप मुझे LinkedIn पे भी ऐड कर लेंगे, so that would be great for me as well. So this is all from my side, and now I request all of you to ask the question. If you don't have any question, then you guys can leave the session. Thank you so much for your time. Sunday is a family time और आप लोगों ने वो टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज।